Hi guys, how are you all? And this is Nafis from Study Time. So, did you think through these pictures that what we are going to learn today? So, today's chapter is microorganisms, friend and foe. So, let's begin with this chapter. Before beginning this chapter, I want to say you a thought that is science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the world. So let's go on the chapter which is microorganisms friend and foe. अच्छा, मैं आज आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बोलूँगा जैसे कि आपको बेटर समझ आ सके. अंडरस्टैंड? ये पिक्चर से आप जान सकते होंगे कि ये सब क्या है. ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही फ्रेंडली हैं और जो हमारे लिए एनिमी भी है. जैसे बहुत ही फ्रेंडली और मतलब इतना दुश्मन है कहने को नहीं. सो ये देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, ये हमारे लिए बहुत एनिमी है. pathogens through air, pathogens through water, pathogens through food, pathogens through direct contact. ये सब हम आगे को डिस्कस करने वाले हैं. Disease causing microorganisms in humans. It is a communicable disease. Did you know what is communicable disease? जो छू देने से होता है. अच्छा, इसका एग्जाम्पल्स है common cold, viral infection, droplet of moisture. Understand? Disease causing microorganisms in humans. Communicable disease, tuberculosis, measles, chickenpox, virus, polio. Understand? Common cold. So, our chapter is microorganisms, friend and foe. Organisms. Did you know what is organisms? Organisms क्या होते हैं? Very small that cannot be seen with naked eyes. हमारे खुली आँख से वो दिखाई नहीं देते हैं. उसे हम organisms बोलते हैं. The organisms which are too small to be seen without microscopes are called microorganisms. इतने छोटे जो हम खुद का नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम देखने के लिए क्या व्यवहार करते हैं? माइक्रोस्कोप. सो this type of microorganisms, this type of organisms is known as microorganisms. Understand? So what is microscope? It is a magnifying device or instruments which is used to see microscopic entities. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू चीज़ मैग्नीफाई हो जाता है और हम उसको क्लियरली देख सकते हैं. छोटे से छोटे, बहुत छोटे. अच्छा फ्रेंड्स, microorganisms can be classified into 4 major groups that are bacteria, fungi, that is not fungi students, that is fungi, protozoa, algae. So let's begin with bacteria. The singular form of bacteria is bacterium. Notice that, bacterium. Bacteria are single-celled organism. वो सिंगल सेल से बना हुआ. Bacteria have cell wall. उसमें cell wall होता है. Bacteria doesn't have organized nucleus. Cholera, typhoid, TB, etc. are caused by bacteria. Understood, guys? Then we move towards protozoa. Protozoa are single-celled organisms found in ponds, river, dirty water, sea water. इसका एग्जाम्पल्स है अमोइबा या फिर अमीबा भी बोल सकते हैं, पैरामेसियम, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम. अच्छा, तो नेक्स्ट पेज.
सो algae आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है. algae आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स. ये एक प्लांट के जैसे होते हैं. एग्जाम्पल इसके हैं स्पायरोगाइरा और क्लेमीडोमोनास. स्पायरोगाइरा जो है वो मल्टीसेल्यूलर है, वो एक algae है. और क्लेमीडोमोनास वो भी एक algae है, बट वो यूनिसेल्यूलर है. ये आपको फोकस देना है कौन मल्टीसेल्यूलर है और कौन यूनिसेल्यूलर है. उसमें क्लोरोफिल होते हैं. दे हैव अ green pigment which is called as chlorophyll. Understood? Then fungi. Fungi are unicellular और multicellular. ये भी unicellular होते हैं और multicellular होते हैं. They don't have chlorophyll. उसमें chlorophyll नहीं होता है. For example, yeast, bread mold, pericillium, etc. And virus. Virus is the smallest microorganisms which can only reproduce inside the host cell. ये host cell के अंदर होता है. जो अभी कोरोना चला है वो एक वायरस है, COVID-19. Virus are considered as borderline line of living and non-living. HIV जो अभी चला है Human Immunodeficiency Virus. And AIDS. Did you know what is the full form of AIDS? Acquired Immunodeficiency Syndrome. SARS COVID. That is now beginning. It is a virus, COVID-19. Did you know what is the full form of SARS? I'm telling that. The full form of SARS is 7 Acute Respiratory Syndrome, which is corona. Virus can only reproduce inside the host cell of other organisms, but as long as the virus is outside of host cell, it shows no sign of living. Therefore, it is considered as the borderline of living and non-living. बहुत खतरनाक है. जब ये बॉडी के अंदर चला गया तो इसको क्या ज़रूरत होती है? वैक्सीन. Through the help of vaccine, it can be died. Understand? If you can't understand, then you write in comment panel. I will answer you. Where do microorganisms live? Did you notice? Microorganisms are found practically everywhere in all types of habitat, like evolution of hot spring, cold region, and desert area. Microorganisms plays an important role in our day-to-day life. हमारा day-to-day life में microorganisms का एक important खेल है, पता है? हमारे पास दो प्रकार के हैं, समझ लो, फ्रेंडली और एनिमी. एक फ्रेंड होता है और एक एनिमी होता है, जो हमारे दुश्मन, बहुत खतरनाक होता है, जैसे वायरस. और फ्रेंडली जो बहुत ही हेल्प करता है हमारे लिए. खाते हैं, देखिए कैसे होता है वो फ्रेंडली. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेकिंग ऑफ कर्ड. कर्ड बनाने के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है. अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिली helps in making of curd. The plural of lactobacilli is lactobacillus. It is an important fact. Notice that. Lactobacillus multiply milk and convert into curd. It is an microorganisms which convert lactobacillus milk, multiply milk and convert it into curd. Understand? Making of bread. It plays an important role in making of bread.
Yeast is used for making bread. Yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubble of gas fills up and increases its volume. मतलब जिस वक्त बबल फॉर्म होता है उस वक्त उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसका शेप इंक्रीज हो जाता है. देन वी मूव टुवर्ड्स फर्मेंटेशन. डिड यू नो गाइस व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. जिस प्रोसेस में, जिस तरीका में शुगर जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं. ये कौन डिस्कवर्ड किया है पता है आपको? एनीवन हु टेल मी इन कमेंट सेक्शन हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन. हाँ गाइस, फर्मेंटेशन इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्टर. इन विच ईयर? In the year of 1857. Medicine purpose. Friendly microorganisms are used in medicine purpose, such as antibiotic. A medicine which stops or kills inhibits the growth of disease-causing microorganisms is called antibiotic. Example जैसे penicillin made from fungi. सेट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन. एंटीबायोटिक ये मेडिसिन है, वो स्टॉप्स करता है मतलब रोकता है, और जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे अंदर उसको वो मारता है. पता है? एंटीबायोटिक विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. So microorganisms also plays an important role in the living organisms and it is very friendly. So vaccine. Vaccine. Did you know vaccine? Vaccine is a special kind of preparation which promote the formation of antibodies, which then fight the invader and protect us. अच्छा, हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो जो कोविड-19 को मारने के लिए कौन हेल्प करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? वैक्सीन का. अगर वैक्सीन हो जाए ना तो हम बच सकते हैं. इस कोविड-19 से फाइट करके हम जीत सकते हैं. वैक्सीन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. जो एंटीबॉडीज़ होता है वो फॉर्मेशन करता है वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो फॉर्म करके वो फिर मार देता है, वो फाइट करता है इन्वेडर के साथ एंड प्रोटेक्ट अस, हमको बचाता है. वैक्सीन इज मेड फ्रॉम डेड एंड वीक. मैंने अभी बोला ना वो मरा हुआ से बना होता है और जो बहुत वीक होता है, कमज़ोर. वीक मतलब कमज़ोर. हाउ डज वैक्सीन वर्क्स? इट डेड एंड weakened microbes enter our body. The body fights and kills the invading agent by producing suitable antibodies. These antibodies remain in the body and we are protected from disease-causing microbes. Antibodies is a special type of protein. Disease like TB. You have heard TB. Smallpox, cholera, hepatitis, polio can be prevented by vaccination. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. Okay, increasing of soil fertility. This plays an important role in our environment through the help of microorganisms. Some bacteria like Rhizobium, you have learned in class 7, the first chapter, Nutrition in Plants.
Rhizobium bacteria plays an important role for human beings, plants, understand? And blue-green algae helps in increasing soil fertility. लोग जो हैं फ्रेंड्स, इन लोग soil fertility को increase करते हैं. Some bacteria like Rhizobium and blue-green algae helps in increasing soil fertility that I have told you. They convert atmospheric nitrogen into soluble form and mix it with soil. Understand? It mix with it soil. Environment cleaning को भी ये help करते हैं. ये हमारे environment को, परिवेश को मतलब clean रखते हैं, साफ सुथरा. Some microbes decompose organic matter present in dead animals or plant and convert them into simpler substance which mix up with the soil. Soil के साथ mix होके वो environment को हमारा clean कर देते हैं. जैसे dead animals और हमारे जो plants, dead plants and animals, they convert microorganisms they convert that dead and decaying things into soil, which makes our environment clean. This how microbes helps in cleaning our environment. Did you understand, guys? Harmful microorganisms. So some microorganisms are harmful for animals and plants, such as pathogens. Disease causing microorganisms are called pathogens. जो disease cause करता है उसे pathogens बोलते हैं. Disease causing microorganisms in humans. हमारे जो bodies हैं, bodies में बहुत ही harmful microorganism enter कर जाते हैं, जो निकलने को बहुत ही तकलीफ है. पता है, ये सब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम लोग. एनिमी, जो हमारे एनिमी है, शत्रु हैं. समझ आया? सो disease causing microorganisms in humans, pathogens enter our body through air we breathe, the water we drink and food we eat. That you have understood. Disease causing microorganisms can also transmit it with an infected person or a carrier. ये communicable disease है बाबू ये communicable disease है. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मतलब इन्फेक्ट होता है. कोई छू देने से हम लोग को भी हो सकता है. अंडरस्टैंड? अच्छा, हम पढ़ेंगे डिजीज को दो भाग में विभक्त करा गया है. एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. द माइक्रोबियल डिजीजेस विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन विथ healthy person is called communicable disease. For example, common cold, TB, chickenpox, cholera, malaria, AIDS, COVID-19. How does communicable spread? Did you know how does communicable disease spread? Communicable diseases can be spread by physical contact with infected person, that I have told you. Breathing of air containing microorganisms, taking invaded food and water. Insect bites, mosquito, housefly and plague. Sharing infected injection needle or bloods. How do we prevent communicable disease? How do we prevent? We should keep a safe distance from infected person. जो इन्फेक्ट हुआ है उस डिजीज से, उससे हमको दूरी अवलंबन करनी होगी. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड से सफ़र है, मतलब उसको कॉमन कोल्ड हुआ है. समझ आया? वो उसको क्या करना चाहिए? शुड ऑलवेज कवर देयर माउथ एंड नोज विथ हैंकरचीफ. उसको हर वक्त रुमाल से अपना नाक और माउथ को ढांक लेना चाहिए. We should keep our
food covered and to protect them from getting infected by housefly. We should protect ourselves from mosquito bites by using mosquito nets and mosquito repellent. We should make sure that only disposable syringe and needles are used for giving injection, avoiding physical contact. Diseases can be prevented by taking antibiotics and vaccine carriers. Some insects and animals which carry disease causing microbes, such as pathogens that I have told you, are called carrier, which carry infected diseases. A person who carry diseases is known as carrier. This, in a simple manner, we can understand this. So, some insects and animals which carry diseases called microbes or pathogens are called also carrier. Housefly, mosquito, red bell are carrier, etc. 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 Understand? How does housefly communicate food? Housefly sit on the garbages and animal excrete. Pathogens stick to their body. When these flies sit in uncovered food, they may transfer the pathogens. We have no. This is how they communicate food. So it is advised always keep the food covered. इसलिए हमको हर वक्त एडवाइस किया जाता है कि खाना को हर वक्त कवर करके रखो, इसको खुला मत रखो. It is very 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 essential for all, because we are eating food. By eating food we get energy. That is very precious for us. Understand? So, mosquito, female Anopheles, carrier Plasmodium, parasite of malaria, and female AIDS, carrier disease or viruses. How can we prevent the spreading of malaria and dengue? All mosquito breed in water, so we should not let water collected in a place like tubs, flower pot, cooler, etc. by keeping our surrounding clean and dry. Nets should be used to combat while sleeping by applying mosquito repellent cream on exposed band of the body. Disease causing microorganisms in animal. Animal may be disease causing microorganisms. Foot and mouth disease in cattle is caused by a virus called Bacillus anthrax. In class 7, have you remember, friends, we have learned that in chapter number 3, fiber to fabric, is anthrax disease. So today we were learning that anthrax disease again. Foot and mouth disease in cattle is caused by a virus called Bacillus anthrax. This Bacillus anthrax. Anthrax disease is harmful for both human and cattle. Disease causing microorganisms in plants. Several microbes cause diseases in plants, which reduces the yield of crop. They can be prevented by using certain chemical called pesticides, which kill the microbes. इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या यूज़ करना होगा? पेस्टिसाइड्स. अंडरस्टैंड? जो क्या करेगा, वो जो माइक्रोब्स होगा ना, हार्मफुल माइक्रोब्स जो हमारे प्लांट्स को हार्म करता है, खराबी उसका चाहता है, उसको मार देगा. पेस्टिसाइड्स. Food poisoning. Have you heard, guys? Food poisoning what? Okay, if you don't know, I am telling you. If food is kept under unhygienic condition, then microorganisms would grow in these food. Microorganisms grow on food, sometimes produces toxic substances. This makes the food poisonous.
कुछ ऐसा समय होता है जिस वक्त अनहाइजीनिक होता है कंडीशन हमारा, उस वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में ग्रो करते हैं, वही फूड पॉइजनस हो जाता है, उसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, सिंपल। इफ दिस पॉइजन फूड इज कंज्यूम्ड इट मे कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ये लास्ट में मार भी देता है, आदमी का जान भी ले लेता है, पता है। फूड प्रिजर्वेशन, हमको फूड को प्रिजर्वेशन करके रखना चाहिए। एंड वी विल डिस्कस प्रिजर्वेटिव्स ऑफ फूड, दैट इज द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल आर गिवन फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेटिव्स दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट। डिहाइड्रेशन, हीटिंग, पैस्चराइजेशन, रेफ्रिजरेशन, ये सब हम लोग का फिजिकल है, इसमें कुछ केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। और जब केमिकल यूज़ होगा तो उसको केमिकल ट्रीटमेंट बोलेंगे। जैसे सम केमिकल ट्रीटमेंट आ सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ऑयल, sodium benzoate, sodium bisulfate. Understand? These are the food preservatives. So students or my friends, dearest friends, today we have completed these chapters. You have any query, then you can ask me in comment box. Understand? I'm waiting for your screenshots. You can take these notes I've just made for you. So come up. I found a riddle for you. A man was outside in the rain without an umbrella or hat, didn't get a single hair on his head. Wait, why? Did you know? It is a riddle. You can solve it. Can you answer me? Answer me in comment section. The answer is he was bald. Study time, study time. Thank you guys for watching this video, and want to give special thank to Shubham who give me opportunity to make this video. Guys, do well in lockdown period and focus on study. Don't forget to subscribe this channel, and I promise you we will make specific videos of all subjects, for all subjects. Please do follow us. Bye guys, we will meet you soon.